नमस्कार, जय जगन्नाथ। ओटीवी हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव 2023 एहार प्रथम संस्करण को स्वागत करुछि मु प्रमिता महापात्र। ओटीवी हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव 2023 presenting sponsor Kasturi Chatua, co-supported by Cucina the Kitchen Experts, associate sponsors Kalinga Hospital Limited and Health Valley Naturopathy and Ayurveda Center. कथारे अछि हेल्थ इज वेल्थ। एही संपद को किपरि सुस्थ भाबरे साइती रखि हेबो से नहीं आमे सदा सर्वदा प्रयास करिथाउ। एक सुस्थ और सुखी ओडिशा गठन करिबार स्वप्न आम मनरे सबु बेले रहिछि। केवल शरीर को सुस्थ रखिबा खाली जरूरी नुहे, मन भी सुस्थ रहिबा अति जरूरी। ए सबु प्रसंग रे आमर एही मंचरे हेबो आलोचना। आम राज्यर अभिज्ञ डाक्तर एवं स्वास्थ्य सेवा सह जड़ित व्यक्तिविशेष सेमानकर मत रखिबे। प्रथमे मु ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क रो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर जागी मंगत पंडा मैम को मंच ऊपर को आसीबा को अनुरोध करिबी। एठी उपस्थित आमर समस्त अतिथि को मु स्वागत जनाऊँगी। विशेष करी आमर आजिर मुख्य अतिथि स्वामी नरसिंहानंद स्वामी जी is presently the secretary of Ramakrishna Mission and Mutt and also runs a higher secondary school, a kindergarten and a polyclinic. As you all are aware that the Ramakrishna Mission and Mutt was founded by Swami Vivekanand ji. He said that you must keep a strict eye on your health. Let everything else be subordinate to that. And I think this is a very, very important point made by Swamiji, which I think is so apt even in today's day and age. In fact, more so in today's day and age with changing environment and globalization. Standing here today, I feel honored and privileged to welcome you all to OTV's first edition of OTV Health and Wellness Conclave. In understanding the difference between health and well-being, I have understood that in short, health is a state of physical being, whereas wellness is the state of living a healthy lifestyle. This convention today will cover various segments on health and wellness, and experts in their respective domains will enlighten us with their insightful talks and discussions. I would like to extend a very warm welcome to all our speakers and thank you all for being a part of OTV's first edition of Health and Wellness Conclave. I do hope that with your continuous support, we will take this conclave to the next level in the coming years. Let me end by a very, very popular proverb which all of us have heard as children, which Woodrow Wilson had talked about. He said, if you lose your wealth, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. And if you lose your character, you lose everything. I know you may ask, or you may be thinking, what is the connection of character with health and lifestyle? And I believe that in personal development, character plays a very important role. Not just from my personal experience, I'm sure people who practice meditation here must recognize and must connect with this philosophy, how character is connected to the mind. And I believe that if a calm and composed mind can provide you with a happy, healthy living, then a strong mind can also develop a very strong principled character. We should spend at least or give at least half an hour or 1 hour of our time every day towards developing our mind, our health and our characters. Thank you. Namaskar. एबे आरंभ करिबा आजिर फर्स्ट सेशन। एई अधिवेशनर टॉपिक हला करंट लाइफस्टाइल एंड हेल्दी हार्ट। एही प्रसंग उपरे आलोचना पूर्वरु आसंतु देखिनबा एई विषय रे एक ऑडियो विजुअल क्लिप। सुस्थ शरीर और सुंदर जीवन जेपरी अंगांगी भावे जड़ित, ठीक सेही परी सुस्थ परिवेश आम समस्तंक पई एकांत जरूरी। विशेष करी एकविंश शताब्दीर डिजिटाल जुगर कार्यव्यस्तता भितरे जीवन संचार करुथिबा हृदय को सुस्थ रखिबार आवश्यकता बढ़ी जाइछि। कारण स्वास्थ्य सह जोड़ी होई रहिछि निजर जीवन शैली और सकारात्मक चिंताधारा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन रो एक रिपोर्ट अनुसार स्वास्थ्य सहित जीवन शैलीर प्राय 60% संपर्क रही जेउथिपाई रोग व्याधिर शिकार हेउछंती लक्ष लक्ष लोक। मेटाबोलिक डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओवरवेट, हाइपरटेंशन भली रोग हेबार संभावना मध्य रही। सेइथिपाई तो सुंदर शरीर सह हृदयर जत्न नेबा आम समस्तंक पई जेमिति एक आह्वान होई जाइछि। सुस्थ हृदय पई पुष्टिकर खाद्य पानीय, व्यायाम सह योग, प्राणायाम और सुस्थ परिवेश उपरे आमको ध्यान देबाकू पड़िबो। ता सहित कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप नियंत्रण उपरे विशेष दृष्टि देबाकू पड़िबो। पुणी चापमुक्त हेबा सहित मद्यपान और धूमपान उपरे अंकुश लगाइबाकू परामर्श देउछंती डाक्टर तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ। एक सुस्थ हृदय सहित सुंदर जीवन यापन आम समस्तंक एकांत जरूरी। एही गुरुत्वपूर्ण एवं चैलेंजिंग टॉपिक उपरे आलोचना पाई मु डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रशांत कुमार साहू, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल एवं एचओडी एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी सम अल्टीमेट डॉक्टर शरद कुमार साहू को मंच उपर को आसवाक अनुरोध करी। आउ एही सेशन को संचालन करने को ओटीवी न्यूज एंकर राजश्री को अनुरोध करी। समस्त को मोर नमस्कार। स्वास्थ्य ही संपद किंतु बदलुवा जीवन चर्चा आम स्वास्थ्य केते सुरक्षित ताकू नहीं तो आमर आज ये सेशन वरिष्ठ विशिष्ट अभिज्ञ डाक्तर मंच उपरे श्रीयुक्त त्रिपाठी आम देश रे पूरा विश्व रे जदि आम देखा तेरे हृदरोगी संख्या सबुठ अधिक एवं 40% सर जो मैंने मृत्युवरण कर बयस 55 रु भी कम माने युवावस्था कहीं। आज यू नो आमर जी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अच्छी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हूँ नंबर 1 किलर। मोस्ट ऑफ द डेथ हुए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रे। आउट ऑफ दैट 50% ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर मीन्स हार्ट एवं हार्ट रिलेटेड और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक 3टा कारण जो हो पारे। आप कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंडियंस और साउथ ईस्ट एशिया आमर जो कज हूँ रोगर आथेरोस्क्लेरोसिस। आथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेसटा 10 years अर्लियर मे बी 15 years अर्लियर इंडियन लोक मान को हुए। दैट्स वाई आमर डिजीजटा मोस्टली 30 और 40 years रु आरंभ होची। से the mortality and morbidity is very high in this age group. Most important that is the productive year of the life. So अपन जो क्वेश्चन को पचारे सडन डेथ हार्ट अटैक रो गोटे वन ऑफ द प्रेजेंटेशन होची सडन कार्डियक डेथ। भल थे नॉर्मल थे हठात मरीजे सो दैट इज कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। एटा कहीं हुए ना आपन को आगुर किसी असुविधा ना कहीं है तार। सो कोरोनरी आर्टरी जो क्रॉनिक नैरोइंग जोड़ा सिग्निफिकेंट नैरोइंग थी आर्टरीर से सिम्पटम्स हम चलिए सीढ़ी चलले उठान चलले चेस्ट पेन के ब्रीदिंग डिफिकल्ट हम। किंतु हार्ट अटैक में जो रेस्पॉन्सिबल से माइनर प्लेक्स व्हाट यू कॉल इन आवर टर्म इज ए वनरेबल प्लेक्स जोटा 20-30% नैरोइंग थी पेसेंट नॉर्मली चलाबुला कला को एक्टिविट कले किसी असुविधा हो सडनली बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस आइदर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से प्लेकटा इरोजन कि रप्चर हो जाए। सो पेसेंट डेवलप से सडन हार्ट अटैक माने से आर्टरीटा बंद हो जाए हठात बंद हो गले पेसेंट गेट से हार्ट अटैक एवं से हार्ट अटैक वन ऑफ द प्रेजेंटेशन होची सडन कार्डियक डेथ बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर आर्रिथमियाज VT कि VF हुए एवं पेसेंट सडनली मरी जाए। श्रीयुक्त प्रशांत साहू आमे कौन आगुरु रिकग्नाइज करि परिबा कि बा किछि वार्निंग साइन थाए कि जे मते हार्ट अटैक आसीबार अछि सब जिनस गोटे वार्निंग सिग्नल थाए जेमति गोटे झड़ा आसीबा आगुरु किछटा गोटे वार्निंग सिग्नल दिए कि हम प्रेडिक्ट करि हुए ने झड़ाटा आसीबो। सेमिति जदि आपण डायबिटीज थिबो ब्लड प्रेशर थिबो किंतु आपण कोलेस्ट्रॉल बढ़ी कि रहउथबो किंबा आपण लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी थिबो आ फूड हैबिट्स बहुत माने इज नॉट गुड ताले यू आर मोर प्रोन टू दिस हार्ट अटैक्स सेटा होची गोटे जिनस। सेकेंड जिनस होची जे चलला बेले तांको जदि किसी छाती रे कष्ट होथबो किंबा झाळ बहुथबो किंबा एमती बहुत वीक लागुथबो किंबा जार बहुत फैमिली हिस्ट्री अच्छी दैट इज घरे मामू घर पटू किंबा काका घर पटू जदि हार्ट अटैक हिस्ट्री अच्छी ताले ए इंडिविजुअल माने दे आर मोर प्रोन फॉर ए हार्ट अटैक।
सो आंको आम कहूँ जमी देखा जाए इंडिया रे बिलो 50 years एवरी मिनिट रे एवरी 4 minutes से जड़े एटलिस्ट हार्ट अटैक हो बिलो 50 years. So it is an enormous amount which has to be addressed. So से warning signal गुड़ा you have to recognize. किसी जति warning signal थाए तले अपन को जाए कि you have to get yourself consulted with your doctor and you have to find out. So से जो मैं कहूँ जो catch them young. माने आमर usually जो younger population अच्छी who are more prone for heart attacks. Now our dictum should be that to catch them young so that they do not have a heart attack. श्रीयुक्त शरद साहू आपन को मोर प्रश्न रहबो जेंडर देखि कि हार्ट अटैक हुए कि एथि पय मु पचारछि दिन थिला कुआ जाय जे महिला को ये 10% रु भी कम होतला आजिकली होउछि जदी तो सब बेले पुरुषों को अधिक अटैक हुए. इज इट ट्रू? महिला मान को कम अटैक हुए तांकर रिप्रोडक्टिव एज रे बिलो मीन्स मेनोपॉज बिफोर मेनोपॉज से माने प्रोटेक्टेड हार्ट अटैक पाई बिकॉज ऑफ हार्मोनल. Then after menopause, the ratio is equal, both male, female, equally affected. श्रीयुक्त महेंद्र त्रिपाठी स्ट्रेस होउछि सबु रो कारण की सबु रोगर कारण माइंडलेस एक्सरसाइज केते मात्रा रे दाई? As a etiology of coronary disease, first is diet, next is exercise, and then is good sleep, then is stress management, then comes lipid, hypertension, diabetes. So I think this is beyond the scope for discussion. But what is important is जो diet actually recommendation अच्छी by American Heart Association, a DASH diet. DASH means dietary approaches to stop hypertension or Mediterranean diet. So practical if you go deep into all these dietary patterns, it is impossible. Nobody in India is practicing. Maybe sadhus, sannyasis may be practicing. Otherwise, it is impossible. You have to take fruits, salads, whole grain, legumes, and vegetables. And processing of the food, either unprocessed or little processed or half processed diet. Next, the amount of salt what you use in diet. We take a lot of salt. It is recommendation is 2.3 gram of sodium. That is equal to 1 tsf of common salt. Similarly, sugar, it should be 6 tsf per day. So these recommendation we are not at all following. Anybody is following. So this is regarding diet. And plenty of fruits. Then non-veg, either it should be seafish, tuna or salmon, or big fishes. You have to remove the skin. Sir, chicken. श्रीयुक्त प्रशांत साहू आजिकल आम समस्ते भावुँ मार्केट किणा को गला बेलू कौन किणवी ऑलिव ऑयल किणवी रिफाइन नेबी जदि नेबी केते रांधिबी केते तेल पकेबी केते कि मो खाइबी माने देखा जाए आमर अजा आई जो मैंने थे से तो ट्रेडिशनल ऑयल नौले हार्ट अटैक हो नाला किंतु आफ्टर ए जो वेजिटेबल ऑयल्स हैव एंटर्ड द मार्केट से फॉर द लास्ट 20 years these are all the safflower, sunflower oil, all these oils in fact गोटे omega-6 omega-3 ratio था omega-6 omega-3 ratio normally 4:1 or 5:1 हवा कथा कि देखा जाए सनफ्लावर और safflower oil भितर the ratio is 140:1. So this indicates that these oils that have entered the household, Indian household, are actually harmful. आपने जो देखिए जो heart disease rise करी last 20 years, one of the major cause is the oil use. Next, what is a good oil? A good oil among all the oils, which is almost matches the WHO recommendation, is rice bran oil. Now, is olive oil good? समस्ते कहते जे आमे 500 टंका तेल देके olive oil खाऊचु, किंतु olive oil is always to be taken raw. Olive oil is never to be taken cooked. Amari Indian cooking states that you have to cook in high temperatures. And when you cook in high temperatures, the good quality of olive oil is lost. So olive oil is only to be taken in salads and sandwiches, which the Western population do. Lastly, how much of oil? We normally recommend 3 teaspoonfuls of oil or 15 ml of oil per day per person. So if you have 5 persons in a house, so you can take 15 into 5, that is around 75 ml oil per day, and the rest of the food you boil and you take. That is how you can prevent heart disease.
सरस साहू आपको मुझे जाना चाहिए जे फैमिली हिस्ट्री गोटे कारण हो पारे कि हृदरोगर जमती आम जहाँ जेनेटिक को फैमिली हिस्ट्री जदि कहार प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज अच्छी ताले से पर्सन हार्ट डिजीज बेसी अफेक्टेड फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज यंग एज मीन्स नॉट दैट मेल पर्सन फैमिली मेल पर्सन यदि एज 65 पूर्व कि फीमेल पर्सन बिलो 55 पूर्व होते आम हार्ट को फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज इन यंग नॉट दैट इफ जनकर फैमिली हिस्ट्री 90 इयर्स हार्ट अटैक है सी पर्सन प्रोन टू हार्ट अटैक से नुहे फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज एट यंग एज निजको भल रखि परिबी हाँ यंग एज जदि हैला ताले दे आर प्रोन फॉर हार्ट अटैक बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त प्रशांत साहू बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त शरद साहू हम सहित आलोचना करने पाई Now we'll request MD OTV Networks Jagi Mangat Panda ma'am to come to the stage and present the memento to the panelist. एबे जिबा हमर सेकंड सेशन को जोटा होची हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ए प्रसंग रे आलोचना पाई आम सहित उपस्थित रहिछंती प्रोफेसर डॉक्टर जयंत पंडा सीनियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक, नीलांजना मुखर्जी मैनेजिंग डायरेक्टर कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर। उभय को मंच उपरक आसवाक अनुरोध करी। यही सेशन को संचालन करने को मु OTV न्यूज एंकर राजश्री को अनुरोध करी। यही प्रसंग उपरे आलोचना पूर्वर आसंतु देखि नबा ए विषय एक एवी स्वाधीनता लाभ परठारु आम देशर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनेक उन्नति साधित होईछि। आम देश में उभय सरकारी और घरोई स्तर में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था रही। सरकारी स्तर में सर्वसाधारण प्रायतः मागणा स्वास्थ्य सेवा पाई तेबे घरोई स्तर में यह देययुक्त रही। खाली सेतिक नुहे घरोई स्वास्थ्य सेवा उन्नत मानर होइथिबा बेले यह प्रायतः सहरांचल में उपलब्ध होइथाय। अवश्य आजिकल छोट छोट सहर में यह मध्य उपलब्ध। प्रायतः धनी और मध्यवित्त श्रेणीर लोक यही स्वास्थ्य सेवार लाभ उठाउथबा बेले साधारण गरीब लोकंक पई यह व्ययबहुल होइथाय। हेले उभय केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजना द्वारा गरीब लोक मैंने आजिकल यार सुफल लाभ करिपारुछंती। आजिकल विभिन्न घरोई मेडिकल पक्षरु सहरांचल में स्वास्थ्य सेवा कैंप एवं ग्रामांचल में सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजन करा जाउछि। तेबे ग्रामांचल किंबा दुर्गम अंचल में लोकंक पाखरे स्वास्थ्य सेवा पहुंचाइबा एबे मध्य आम पई आह्वान होइछि। आज भी अनेक स्थान में ठिकणा समय आम्बुलांस पहुंची पारुनी। केतेक स्थान में मेडिकल अभाव सहित चिकित्सार अवहेला भली अभियोग मध्य सामना को आसुछि। उभय घरोई एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उन्नति आसिले लोकों को उत्तम चिकित्सा मिल पारिबो एथिरे संदेह नाही। श्रीयुक्त जयंत पंडा मु आपंठु आरंभ करने चाहिए जे जिते हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कथा आम कहूचे जहाँ हूँ प्राथमिक दायित्व सरकार केते निर्वाह करि परछंती। एवरीबॉडी हैज ए राइट टू हेल्थ तापाई सरकार प्रत्येक स्तर रे स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा पई चेष्टा करछंती। साधारण काश थंडा ठू आरंभ करी कैंसर जाए, डेंगू ठारू आरंभ करी डायरिया जाए, जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन ठू आमर आई लेंस इम्प्लांटेशन जाए, हार्ट वाल्व ठू आरंभ करी आईसीयू केयर आउ कॉस्टली मेडिसिन्स इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जाए। वर्तमान सबू जिनस आमर गवर्नमेंट सेटअप रे अवेलेबल अच्छी। केवल अवेलेबल नहीं, बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स टेक क्वालिटी केते अछि श्रीयुक्त पंडा? क्वालिटी विल बी कंप्रोमाइज वंस द पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड। बहुत टाइम आम देखीचु धरतु एंटी स्नैक भेनम नहीं, गोटे साप कामुड़ा पेशेंट आसला, पेशेंटा किनी पारला नहीं, तो जदि सरकारी सप्लाई रे अवेलेबल नहीं आमे टाइमली एसबी देई परनु बा आईवीआईजी देई परनु बा गोटे आमे अनेक समय श्रीयुक्त पंडा देखुछु आपण जो कहले फ्री सर्विस आमे दउछे। अनेक समय देखुछु मिनिमल हॉस्पिटल गले जा पाइबा कता बेड टे भी पाउ नहंती, एसीबी रे देबे निकट पानी भी आसु नथिला। आपण जदि कहिबे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वर्तमान नहीं गत 100 वर्षर समस्या जोठी जो हॉस्पिटल सबु रोगींकर आशा भरोसा आउ जोठी रोगींकर संख्या रे किछि लिमिटेशन नहीं। आपण देखिबे किछि हॉस्पिटल अछि से माने
फ्लोर रे पेशेंट रखती जदि 20 बेड अच्छी 20 पेशेंट रखिए किंतु गवर्नमेंट रो सही रेस्ट्रिक्शन हो पारनी 20 जगह 200 पेशेंट भी रही पारे आउ जो डॉक्टर सिस्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 20 जन अपॉइंटमेंट होती से 200 जन को भी देखा पड़ो कहीं हेल्थ केयर इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल लोकंकर भरोसा एतिकी अच्छी आपन जानिछंती 100 वर्ष हलानी मु एससीबी मेडिकल कॉलेज कथा कहूची बेड केबे खाली पड़ीनी किंतु बरंडा खाली नहीं पाहाच खाली नहीं एपर कि बाथरूम पाखरे भी पेशेंट ना आपण कहउछंती जतिका हम इंफ्रास्ट्रक्चर नुहे लोक अधिक हो जाउछंती आमे तांको जोगै परने रोग बढ़ुची जा पई सरकार दायित्ववान होबा कथा रोग बढ़ुची रोगी बढ़ुचंती मु 30 वर्ष तले जतले मेडिकल कॉलेज रे जॉइन कली मेडिसिन डिपार्टमेंट रे बेड संख्या थिला 230 वर्तमान मेडिसिन डिपार्टमेंट रे सैंक्शन बेड संख्या हला 550 आउ आमे जो एम्स प्लस मॉडल करिचु सेठी सैंक्शन बेड संख्या हला 1000 किंतु वर्तमान 1500 पेशेंट डिपार्टमेंट रे ट्रीटमेंट होउचंती आ मु निश्चित जे जेतेबेले आमे नवा बिल्डिंग को शिफ्ट करिवु ता आहुरी बढ़ी जाइथिबो किंतु आशा करिवो सर जेमति कि आमे जुग देके आपण जुग सहित ताळ दे रोगी संख्या बढ़ुची बेड बढ़ुची आम इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार बढ़ेबे नीलंजना मैडम आपण मु जाने को चाहबी बोथ प्राइवेट किंबा पब्लिक सेक्टर हो गवर्नमेंट तरफ रो कौन सपोर्ट दरकार both government and private hospital have to be together to cater the population amaro jete population neither can only government can cater nor can only private cater but gote infrastructure problem achi for private hospitals again Odisha government has supported hospitals in a big way BJ Kalyan BSKY scheme is very good but a minimum thing which I want to give an example aji amaro biomedical waste jeta asuchi baharuchi hospital ru jete sankhare hospital बढ़ीची माने the number of hospitals which have increased do you know that we just have one vendor for biomedical waste disposal in entire of Bhubaneswar alone Kalinga hospital has 100 kgs of general waste which is generated every day तारो गाड़ी जेटा आसुची सेटा एते छोटो जे 5 थरो गाड़ी को पठिया पड़ुची so these are the general infrastructure for example lead apron amaro kebe use हुए when we are doing any radiological procedures do you know for disposal of lead apron every hospital has to write a letter to Bombay Calcutta then the disposal is happening these are the basic requirements which the government has to see because hospital khali करले हबनी एगुडा हैला basic requirements which I think from the private sector we need help मैम जेतेबेले प्राइवेट कथा उठुची सेतेले प्रॉफिटेबल एजेंसी कथा भी हमें केमती न हवा प्राइवेट हॉस्पिटल जने जाउची से कहूची जे मिनिमल तो 10 लाख खर्च हबो से जगह कौन करबा गोटे साधारण लोक sustainability in a private hospital is a very big point and today I would like to say in this forum that sethipai foreign investments asiki amaro bodo bodo hospital they are investing in our big hospital and they are buying out the hospitals big investors are investing kahinki sustainability is a problem for example one thing to buy a machine for any private hospital there is no subsidy but a government hospital does not need to even think before buying a latest CT scan machine. To upgrade a machine, gote scope jeta mane arthroscopy gote scope hela 4 lakhs. We need some kind of support and subsidy and industrialists who are investing in healthcare also need some kind of support because we are catering to also government schemes patient. Ame garib loko pai bhi chikitsa douchu. It is not that we are just catering to only rich people and today the healthcare system Rajeshi I would like to say is mostly are catering to middle class and BSKY most of the hospitals are readily taking BSKY but there is no subsidy for the private sector which is where we want some subsidy something in the equipments maybe made in India equipments we want certain subsidies okay आमर जो 3 टायर माने हेल्थ सर्विस जमती कि फर्स्ट PHC CHC सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट थर्ड है मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर अच्छा मोस्ट ऑफ इंडिया माने 80% इंडिया तो रूरल रे रहउची माने गाँ रे रहउची केतोटी प्राइवेट हॉस्पिटल गाँ रे हिची नहीं this is a sad state ebe baharuchi where PPP model re बहुत गुड़ा government is trying to fund in PPP model and they are requesting big PSUs to fund like Tata Medica Jharsuguda re jemti heichi
Because running a hospital in the rural areas and making it viable is a very important area. Get gote hela manpower, infrastructure, hospital build korile je hospital chalibo seita nahi. Manpower is a very big thing. केमती हुआ जदि पब्लिक प्राइवेट हेल्थ सर्विस एकाठी काम करन Yes, they need to work together. That is what I said. It's already there कहीं ना कोविड बेले आपण देखिले हाँ, we did that. पब्लिक पार्टनर Even प्राइवेट PPP partnership is also there. and whole covid government acquired all the available ICUs in the state, all the available bed in the state. बहुत धन्यवाद सब श्री डाक्टर पंडा कहबे बहुत जे आमे धन्यवाद बेसी निरंजना मैडम हम से आलोचना करिया पई हमर ये सेशन को रखुछु थैंक यू सो मच Now we'll request MD OTV Network Jagi Mangat Panda ma'am to come and present the memento to the panelists. OTV Health and Wellness Conclave 2023 presenting sponsor Kasturi Chatua, co-supported by Kuchina the Kitchen Experts, associate sponsors Kalinga Hospital Limited and Health Ville Naturopathy and Ayurveda Center. Now we have with us Swami Narasimhananda, a highly dignified persona amongst us. It's our privilege and honor to have Swamiji, popularly known as the motivational and corporate speaker. Now I would like to request Swami Narasimhananda to come onto the stage and deliver an address. Good evening to all of you. Namaste. Today, if one were to travel across the world, accessibility to healthcare, I can tell you confidently, is the best in our country. We witnessed that recently in the COVID pandemic, but also I have had the privilege of serving in remote places in the Himalayas and many other remote areas in Ramakrishna Mission. And I was amazed how in India, at any unearthly hour, you can go and knock the doors of a specialist, a cardiologist, a surgeon, and they are available, which is unthinkable of in the Europe, which has so-called structured healthcare system. It's unthinkable in the United States, of course, where you have to wait for the appointment of a specialist for at least a fortnight or so, unless, of course, you are having some emergency, casualty. So that we always need to remember what kind of wonderful work healthcare fraternity is doing. I just want to remind you of this wonderful system our body has, and that is homeostasis. When it is cold outside, we shiver and the body temperature is maintained. When it is warm outside or hot outside, we sweat and again the body temperature is maintained. What if our mind could also develop a homeostasis? What if we could be resilient? In fact, resilience is one of the key qualities required of a leader today. If you go to any top international business school, today we are talking about empathy and resilience. Because problems will be there, challenges will be there. The leader is one who is able to bounce back from the problems and challenges and face whatever one has to do and move on. That's a tremendous quality which is called resilience. Since the body has this homeostasis, our scriptures across major world religions talk to us about some kind of homeostasis. For example, if you see the Bhagavad Gita, it talks about how you have to be unattached in the time of happiness. Sukheshu vigata sprihaha. In time of happiness, you are unattached. Dukkheshu anudvignamana. In the time of misery or suffering, you are not disturbed. This is a homeostasis at the psychological level. And this is what we need to focus. As the famous Marxist, dialectical Marxist Slavoj Zizek wrote in his book, he brought out a slim volume called COVID-19 Shakes the World. And there he says that one virus could achieve
what political theorists, revolutionaries, even spiritual leaders could not do for millennia. This virus brought the entire humanity as a one unit. And that's something worth pondering. So, if we have an enemy, if we have a common enemy, of course we come together. But then why can't we have this steel-like determination, this spirit throughout? So at least for you and for most of us, the first step in having a healthy psychological life is to understand our limitations. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna put it very poignantly. He says, Jatasya hi dhruvam mrityuhu. Whatever is produced, whatever is created, whatever is born has a definite death. We should be rooted in ground reality. That's the first thing I understand, which gives you a lot of peace of mind. The moment you think that you are there to change the world, believe me, it brings much mental disturbance along with it. It might be a fact that most of you might change the world in many ways. But if you want to do that, the first thing you should do is to understand that you are not God. You have many limitations. The body, the mind, the respiratory system, the intellect has many limitations. One of the shlokas in Bhagavad Gita, which impressed Swami Vivekananda very much, is the shloka which talks about how one can see the absence of work in work and the presence of work in where there is no work. Karmani akarmana yah pashyet, akarmani cha karma yah, saha buddhiman manusheshu sa krishna karmakrit. A person who can see work where apparently there is no work and absence of work where apparently there is work is an intelligent person who has finished all whatever he had to do or she had to do. That means whenever you are working outside, you are tremendously busy doing whatever you have to do, there is a core of your being which is silent and rooted to your true existence. So it does not change. And whenever you think that you are not doing anything, you are simply lying down, your mind is making calculations, it is selecting from various options, and it is constantly working. First, we have to understand that we are all limited, we all have an expiry date. Second, we have to understand that there is work and the absence of work all the time, everywhere. And the third thing we have to understand is that we can actually increase the amount of or the time of bliss which we have. But at least in the case of holistic health, I think, I believe, I pray that we give a better tomorrow to our future generations. OTV Health and Wellness Conclave 2023, presenting sponsor Kasturi Chatua, co-supported by Cucina, the kitchen experts, associate sponsors Kalinga Hospital Limited and Healthville Naturopathy and Ayurveda Center. And now I'll request Mr. Ranjan Satpathy, Creative Head, Odisha Television Network, OTV, to have an interaction with Swamiji and moderate the session. Thank you. Really, we are privileged, Swamiji, to have you, and whatever we listened till now, it was really an insight. Many magazines, many international journals, they have been saying that there is a big threat of another pandemic going forward, and it is called mental illness. So how do you take on it? Honesty is the best policy, they say, and somehow down the line we have forgot it. So now our problem is we have a self which we have thought about ourselves. Okay, it's easy for everybody to think that they are as good as Albert Einstein. There's no problem about that. And there is a real self, which is what you really are. The more difference, the more, gap between these two, the projected, whatever you think you are and what you really are, is the problem. So we have to become honest. Doctors now, the most sought after specialty in medicine is radiology. They don't even have to see the patient actually. So
bedside practice is gone almost from medical science. That's a bad thing. Not only, so you cannot blame the technology for everything. So we have to converse with people, human beings. That's a great, that has got, people who are into mental health know that it has got a great therapeutic effect. हमें कहा जाता है कि overthinking is a big no. But somehow actually we are being inspired कि चलो मेहनत से ज़्यादा मेहनत करो, जरूर से ज़्यादा मेहनत करो. So how to make it a balance? Overthinking is one of the symptoms of mental anxiety. One of the symptoms, common symptoms about what you call this, depression, etc. is random thoughts, overthinking, etc. So you are working in media. As far as media is concerned, there are two ways to go about it. One, the not so good way, is to think about the competitor and try to beat the competitor. The second one is focus on the content. So if your content is good, you may be an unknown YouTube channel, but people will believe you, believe me, people will pick up your content. But if you are only focused on how to beat the competitor, it will get on to you, it will take a heavy toll on you. So it goes, this thing can be extended to all the things. And as in the Gita, in the 6th chapter of the Gita, Sri Krishna says, everything has to be done with moderation. Sleep. Recently I found to my dismay that India is one of the most sleep deprived countries, third in the world. And that's a problem. So you have to sleep. When you have to sleep, you have to sleep. Drink plenty of water. Have food which you can digest. And then do whatever you want. The problem is we have compromised all these things. I will give you an example, how we have created an entire generation of youth who are working when the white person is waking up. I don't know if you have found the trend. This has led to paunches among males and PCOD among females. And what do you say? What doctors prescribe? You should change your routine. How would that poor woman change the routine? She has to go and work for that IT company when that white person is awake. So these are certain things as a country, as society, we have to rethink. And then if we go back to the basics, as they say, then we will be definitely Bharashamya. I understand Odia only, I am not able to speak it. Bharashamya will not be. Manasik Bharashamya. That is mental tension will not be there. Thank you. Thank you so much, Swamiji. But we'll request MD Jagi Mangat Panda ma'am to present the shawl and memento to Swami Narasimhananda. OTV Health and Wellness Conclave 2023, presenting sponsor Kasturi Chatua, co-supported by Kuchina the Kitchen Experts, associate sponsors Kalinga Hospital Limited and Health Ville Naturopathy and Ayurveda Center. And now we have the session that is on stress and mental health. कुहाजाए आमर सबुठु बड़ शत्रु हेला चाप बा मानसिक उत्तेजना आउ एहा अधिक समय धरी लागि रहिले मानसिक अवसाद रे परिणत होई थाए। विभिन्न कारणरू एबे चाप ओ मानसिक अवसाद मनिषकु रुग्ण करिबाकु बसिलाणी। विशेष करी युववर्गक क्षेत्र रे एहा अधिक मात्रा रे देखिबाकु मिलुछि, जहार परिणाम स्वरूप आत्महत्या भली घटना सामनाकु आसुछि। प्रेम तथा पारिवारिक समस्या मानसिक विषादर कारण होइथाय, जहाकी आत्महत्यार रूप मध्य नै थाय। अत्यधिक मानसिक चाप एवं निज उपरे नियंत्रणर अभाव जोगु मध्य एपरि घटिथाय। अनेक समय रे ऋण बोझ, आर्थिक दुस्थिति, करियर रे असफल, निर्यातना, रोग व्याधि सह विवाह तथा दाम्पत्य जीवन रे अशांति और पारिवारिक कलह आत्महत्यार प्रमुख कारण होइथाय। तेबे विषम परिस्थिति रे जीवन यापन करुथिबा ए मनिष सतरे होई परिबो चापमुक्त? आत्महत्या भली घृण्य पदक्षेप को केमिति रोकी हेबो? सेथि पई कोन रहिछि प्राथमिकता आउ समयर आह्वान?
एबे ता उपरे समस्तंक नजर। ए सेशन टी को मॉडरेट करने को ओटीवी न्यूज एंकर पूजा को आसवा को अनुरोध करी। ए प्रसंग रे आलोचना पाई आम सहित उपस्थित रही डॉक्टर अमृत पाटजोशी, एचओडी साइकेट्री डिपार्टमेंट हाईटेक हॉस्पिटल, डॉक्टर शुभेंदु मिश्र, एचओडी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट सम हॉस्पिटल एवं शारदा प्रसन्न स्वाई, एक्स डायरेक्टर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। समस्त को नमस्कार। तो डॉक्टर पाटजोशी, तो फर्स्ट मु बुझा चाहिए जो आम जो चाप कथा कहते टेंशन कथा कहते रियल अर्थ रे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एवं केमती जानिबा जे मु स्ट्रेस रे अछि बा आपण स्ट्रेस रे अछंती बोली। स्ट्रेस रो डेफिनेशन आज जानवे सेटा होची बॉडी और माइंड रो इट्स ए रिएक्शन और रेस्पॉन्स टू ए रियल और इमेजिन्ड थ्रेटा रियल हो पारे इमेजिन्ड हो पारे। स्ट्रेस रो जदी आपण डिफरेंट सिम्पटम्स देखिए मेजॉरिटी आम देखिए जदी फिजिकल सिम्पटम्स विषय कथा बा इट माइट बी हेडेक, एब्डोमिनल पेन हो पारे, परिस्रा बार बार लगी पारे, तंटी सुखी पारे, निश्वास नबार कष्ट हो पारे, कन्स्टिपेशन हो पारे कि बेसी झाड़ा भी हो पारे, भोक केबे केबे लोक बेसी लगी पारे, इमोशनल हो पारे, सैडनेस है, अस्तव्यस्त है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओवरवेलम फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग हो पारे, मरजीवी कि किछोडे हे जीवो कि। ओके डॉक्टर मिश्रा आपण पाखक आसवा चाहिए जमती कि आपण मध्य जानिछंती जे 10 अक्टोबर रे आमे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पालन करिछंती एवं एथरर थीम जदि देखिबा रहितिला जे मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, किंतु अन्यपटे जदि आमे देखिबा तले WHO रे डेटा या कहूची जे विश्व रे प्रति 8 जन रे जणे मेंटल डिसऑर्डर रो शिकार। आजिकली समस्तर जितेबाला जहाँ भी रोग होची, हार्ट रोग होची बा ब्लड प्रेशर होची, डायबिटीज होची, समस्ते डाक्तर पाक जाउछंती आ घरे तांको सहानुभूति जणाउछंती हार्ट रोग हो गला ताको भल से देख, किंतु मेंटल हेल्थ जितेबाला इश्यूज आसूची एटा गोटे बैक स्टेप रे पड़ी जाउछ सब बेले ताको साइकेट्री प्रॉब्लम होईची तार गोटे प्रॉब्लम साइको मेंटल एमती वर्ड सब नेगेटिव वर्ड्स कहउछंती जोटा कि आजिकल का जुग रे गोटे बड़ स्टिग्मा अछि। तो आपण मानक माध्यम रे एई प्रोग्राम माध्यम रे आमे समस्त को जणाया चाहूँ जे एटा गोटे स्टिग्मा न रहू आ समस्ते ओपन अप होके आसतु। स्ट्रेस गोटे एमती जिनस आम लोकंकर एसी रूम रे स्ट्रेस रे निद हेनी किंतु लोकंकर स्ट्रेस फ्री थाई कि स्टेशन कड़े पूरा ट्रेन लाइन जाऊँ आराम से निद हम, बट से स्ट्रेस को फेस करने आमर केते संबल अच्छी केते आमर पावर अच्छी फेस करने जो रेजिलियंस सार कहते आम केमती बाउंस बैक करि परिया। स्ट्रेस समस्त को आसी एमती को लोक नाही जे लाइफ रे स्ट्रेस आसी जे बेस सतेज सुंदर रिफ्रेश देखा जाउथिबो ता भितरे भी स्ट्रेस रही थाई पारे, मेंटल डिसऑर्डर रही थाई पारे। डॉक्टर स्वाई आपण पाखक आसीबा को चाहिए। डॉक्टर स्वाई केवल विश्व पाई ये चिंतार कारण नुहे आम राज्य रे भी मानसिक रोगी संख्या बढ़ुची। रिसेंटली राज्य सरकार जो डेटा देइछंती से डेटा कहूची जे 2020-21 रे आम राज्य में 13,000 रु अधिक मानसिक रोगी चिन्हट होते बा हॉस्पिटल को आसी ट्रिटमेंट पाई। से भली 2021-22 रे ये संख्या 17,000 को पहुंची एवं 2022-23 रे ये संख्या पाखापाखि 23,000 पहुँचलानी, अर्थात प्रति वर्ष 4,000 रु अधिक मानसिक रोगी संख्या बढ़ुची। किंतु आपण तो जानिछंती आमे ओडिया माने खास करी शांति प्रिय, अहिंसा प्रिय, भोजन प्रिय भी एवं मजा मस्ती रे जीवन काटिबा को पसंद करती, किंतु ओडिया भितरे ये मानसिक रोग कहीं बढ़ुची। मानसिक चाप बा स्ट्रेस समस्त प्रथम आम जाना दरकार सेटा बेनिफिशियल। जदि ओटीवी जो मैंने कर्मकर्ता से माने जदि सेतिकी स्ट्रेस नहीं था आम ये आज बसी न जिते मानसिक रोग अच्छी मुख्यतः 75% बा 75% मानसिक रोग आरंभ हुए 15 ରୁ 30 वर्ष मध्य माने एडोलेसेंट एज रे। आउ ए एडोलेसेंट एज रे जो मानसिक रोग वर्तमान बढ़ी तार मुख्य कारण होची एडोलेसेंट मानकर निशाग्रस्त मानसिक समस्या। द्वितीय जिनस एडोलेसेंट एज रे बाप माँ मैंने सेमानकर स्वप्न सार्थक करने पिला ठाई स्वप्न सार्थक करछंती। इवन इफ कह जाउची जेतेबेले गोटे पिला माँ पेटरे अच्छी बाप माँ डिस्कसन करछंती ताको को कोचिंग सेंटर एडमिशन दऊ से नीट पाइब ना जेई पाइब ना आईआईटी पाइब, तो निजर जो स्वप्न डाक्तर हबार डाक्तर न हो पारे, इंजीनियर हबार इंजीनियर न हो पारे, तांको स्वप्न को सार्थक करने से पिला उपर लजुचंती। डॉक्टर पाटजोशी
जे प्रकृत में कौन स्ट्रेस फ्री लाइफ आजिका डेट रे संभव कि जिते बड़े आम सबुथ नंबर 1 हवा चाहूँ पाठरे करियर रे एम्प्लॉय नंबर 1 से स्ट्रेस फ्री लाइफ संभव कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हूँ गोटे टार्गेट ओरिएंटेड होगा फ्री हो पारे सो केमती रिडक्शन करें केमती गोटे पॉजिटिव रही पार दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो देखो स्ट्रेस कौन जदि आप 100 टंका अच्छी आप 150 टकर जिनस किणा चाहते स्ट्रेस हम जदि आप 60 टका किणा चाहते ये 40 टका कौटी रखी भाव मैंने इट इज जस्ट दैट इट इज माई थॉट गोटे परसीव्ड अच्छी गोटे जिनस ताको आम केमी भावा सी डिपेंड होची देखो गोटे वेट अच्छी यदि गोटे 100 किलो वेट अच्छी कि 50 किलो वेट अच्छी मो मुंडे नेबी आ 50 किलो वेट गोटे मुझे आंगुठे नेबी फरक अच्छी ना नहीं केमती ताको डेवलप करी तो ताको तो आम करें किंतु रिड्यूस करें अल्टर कर सिचुएशन को कंट्रोल एक्सेप्ट करवा किसी जिन लाइफ जोड़ा आम चेंज करें जोड़ा चेंज करवा बुझेवा निजको हेल्दी लाइफस्टाइल जमी सर कहते बुझेवा निजको रखा भलरे खाइबा सब्सटेंस इज वन थिंग मुझे कोपिंग इज वेरी इंपोर्टेंट सब्सटेंस इज द लास्ट थिंग जोटा आप कोपिंग स्ट्रेस से नवा कथा रेजिलियंस बिल्डिंग नंबर 1 थिंग एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड इट हैज टू बी चक्ड आउट मार्क बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आम छुआ मानक शिखेने कम्युनिकेशन स्किल्स आम दौने केमती हाँ कर जगह ना कर ना जदि कर केमती कर वी हैव नॉट टॉट देम पढ़ले उठा शिखेने आम छुआ मानक आम रास्ता बन चले एज पेरेंट आम कम हो रास्ता बन चलवा छुआ चलो गोटे ना गोटे एंड हम जोटा आम रास्ता बन पारानी मे बी आम जो रास्ता बनईचे से रास्तार से छुआ जीवनी से जो पढ़ो उठब कि नहीं पढ़ीगले आम भावानी कि लाइफ इज एंड्स देयर फेलियर्स विल कम फेलियर्स इज पार्ट ऑफ लाइफ जब आम एक्सेप्ट करवानी फेलियर तो आम सक्सेसफुल हो पारानी स्ट्रेस स्ट्रेस इज पॉजिटिव लेट अस नॉट मेक इट नेगेटिव ये हम भावे ओके डॉक्टर मिश्र जदि जड़े युव वर्ग हो बा जड़े ओल्ड एज व्यक्ति हो स्ट्रेस भितर अच्छी आम जानूँ से समय रे तार फैमिली हो तार फ्रेंड्स हूँ बा पूरा सोसाइटी रो भूमिका एटी केते गुरुत्वपूर्ण सोसाइटी फैमिली फ्रेंड्स एमाने कौन करबा दरकार जहाँ वर्तमान डेट रे हो नाही आजिकल समस्त वर्चुअल फ्रेंड्स अच्छा गोटे पोस्ट कले जदि एतिकी लाइक्स न आसला से लोक आज्ञा मुझे पोस्ट कर 1000 लाइक्स आसुची मोर कहीं एत कम लाइक्स आसुची भी स्ट्रेस जाऊँ तो वर्चुअल फ्रेंड्स बहुत ता ओरिजिनल फ्रेंड्स नहांती कि आप पढ़ी जाइए जब ओरिजिनल फ्रेंड्स थे से आपको हेल्प करेंगे तो सब बेले सोसाइटी रे आपण सांगसाथी बनातु कथा हूँ जहाँ भी स्ट्रेस आसपर डिस्क्लोज करूँ क्या तो कथा हूँ जी आप शुणव मेन इंपोर्टाट पार्ट आप स्ट्रेस शुणापी जी लोक शुणव ताकू कहे से मे भी तुम बापा हो पारे भाई हो पारे भौणी हो पारे गर्लफ्रेंड हो पारे बॉयफ्रेंड हो पारे जी शुणव ताकू कहे जी शुणवनी आपको इग्नोर कर कहले आप जहाँ स्ट्रेस थी से बढ़ीज कारण गोटे लोकर गोटे प्रोब्लेम गोटे छोट प्रोब्लेम सॉल्व करना लोक रंग डिसीजन नहीं पार्टी कि जब आप जो क्या कहे गोटे लोकर 1000 सॉल्यूशन बाहरी पार तो स्ट्रेस रु बचापी निज किसी समय दिंतु जोटा मी टाइम कह हुए से योगा पड़ो जमी आप कहले डॉक्टर स्वाई जितेबाला एक सामना को आसूची बा एनसीआर भी ये डेटा दौची जे आम देश में खास करी हत्याठू भी अधिक आत्महत्या लोकों जीवन नौची से क्षेत्र में सरकार कौन करुछंती लोकों स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पाई एक्चुअली पोस्ट कोविड समय पर ठारू आत्महत्या प्रवणता हम लोकों भितर बहुत बढ़ी मानसिक रोग हो निशाग्रस्त समस्या हो से बर्तमान सरकार तरफ आमर गोटे इम्पोर्टाट कंपोनेंट रखा जाम टेली मानस कहूँ ये टेली मानस रे जेकोसी लोक जेकोसी समय आमर जो नंबर अच्छी गोटे नंबर अच्छी से नंबर हूँ 14416 आमर ओडिशा रे कटक मेडिकल कॉलेज बा उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य अनुष्ठान आमर ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज दुईटा जगार अच्छी 24/7 जेको समय किसी कौन लोकर आइदर सुइसाइडालिटी हो कि कौन मानसिक चाप हो कि किसी डोमेस्टिक भायोलेंस हो सी सजेसन नहीं पार ओनली तो से सजेस्ट करेंगे ता सहित आम मानसिक रोग विभाग में गोटे रखा जाम टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जोटा कि 180034572888 एथे आप प्रोफेशनल काउंसलर जो मैंने क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट तांकोटू आप हेल्प नहीं पारे आउ सबुठ बड़ कथा है सरकार तरफ वर्तमान सबू मेडिकल कॉलेज रे मानसिक रोग विभाग में मानसिक रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट अच्छा ता सहित सबू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे गोटे गोटे डीएमएसपी यूनिट रखा जाइए आउ लोकों को जो भ्राम्यमाण जो आमर गाड़ी गाड़ी साहाय्य लोकों को सेवा जोगाई दिया पारुछि सेशन को एठी सारिबा बहुत बहुत धन्यवाद We will request Swami Narasimhananda to present the mementos to our esteemed doctors.
OTV Health and Wellness Conclave 2023 presenting sponsor Kasturi Chatua, co-supported by Kuchina the Kitchen Experts, associate sponsors Kalinga Hospital Limited and Healthville Naturopathy and Ayurveda Center. Now I would like to call upon Professor Dr. Manoj Kumar Sahu, gastroenterologist and hepatologist, for the topic discussion on liver transplantation and future prospects in Odisha. Sir, welcome and पचारे को चाहूँगी केते बड़ा चैलेंज थला आपण ए जो लिवर ट्रांसप्लांट करले. लिवर होची आम शरीरर सबुठु बड़ इंटरनल ऑर्गन. लिवर बिना जीवन संभव नुहे. मोर गोटे जीवन गोटे लिवर, तेणु आम समस्ते जाचु मुझे लिवर को सुस्थ रखी सुस्थ रही पारि. लिवर 500 रु अधिक कार्य करे अहरह मत सुस्थ रखापी. एमती कौन सी ऑर्गन नहीं आम बॉडीर जी कि एते बेसी काम करे. आ लिवर रिजर्व कैपेसिटी आम बॉडीर सबुठु बेसी. तेणु लिवर कष्ट पाइले आपन किसी देखाए नहीं. आ लिवर एमती गोटे ऑर्गन बॉडीर ओनली ऑर्गन जी कि रिजेनरेशन हो पारे. 75% लिवर नष्ट हो गले काटिदेले भी लिवर नॉर्मल हो 2-3 मास भितर. मुझे देखुली ओडिशा रे बहुत लोक जाउछंती, वेस्ट बेंगल जाउछंती जो मानकर लिवर बहुत एडवांस स्टेज रे अच्छी, लिवर फेलियर अच्छी, किसी चिकित्सा नहीं. तेणु मुझे गोटे स्वप्न देखी, अरे आम ओडिशा रे तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो पारुनी. लिवर डिजीज जदि विषय कहि बढ़ी बढ़ी चली. आम देखो पॉपुलस कंट्री जदि चाइना सांगे कंपेयर करूँ 97 मसीह चाइनार लिवर डिजीज कमी कमी चली. आम भारत तो बढ़ी बढ़ी चली. आम साइंस तो ये डेभलप है तथापि देखो लिवर जनित मृत्यु संख्या 4% पहुँचला आम भारत में. ओडिशा रे लिवर डिजीज बढ़ी बढ़ी चली. गोटे फैटी लिवर प्रति 3 जन रे जनकू, प्रति 3 जन सुस्थ लोक को देखो जनक पाखे लिवर डिजीज अच्छी. ये एपिडेमिक हिसाब से बढ़ी बढ़ी चली. तो से जो स्वप्न थिला बहुत वर्ष तले, से स्वप्न पर जो ओडिशा फेरिली लगिला बोधे संभव नुह, किंतु से स्वप्न पर साकार हो पारा. प्रथम एक द्वितीय ऐतिहासिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन 2020 करिछु. तापर किसी हॉस्पिटल आरंभ कले, बहुत भल कथा. सरकार एवं आरंभ करने को जाउछंती. और बहुत भल जिनस जे लिवर डिजीज को प्रिवेंट करी हबो ब्यूटीफुली. लिवर डिजीज को अर्ली स्टेज रे आइडेंटिफाई कले संपूर्ण भल करी हबो. जदि लिवर डिजीज बहुत एडवांस स्टेज रे अच्छे ट्रांसप्लांटेशन करी हबो. ओडिशा रे करिछु सक्सेसफुली. हॉस्पिटल आरंभ कले हो पारिबो, संभव हो पारिबो. आ ओडिशावासी को मोर बंधु बांधव परिवार वर्ग को बाहर को जीवाई पड़ोनी. कारण लिवर ट्रांसप्लांटेशन कनसीडर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हाई एंड सर्जरी. एते बड़ सर्जरी जे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अधिक कष्टकर सर्जरी. तो ये लिवर ट्रांसप्लांट जमती कि बहुत ही कॉस्टली सर्जरी हो कि बहुत डिफिकल्ट सर्जरी हो, ओडिशा रे स्पेशली यार हर्डल्स कौन आम देखा पाचे या केमती कम्बैट कर परिबा. गोटे कथा होचे टेक्नोलॉजी. से लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपर्टाइज आम से जिनस को एक्वायर करने पड़ो. आउ बहुत बड़ कष्ट करने पड़ोनी. आम मैनेज करूँ. तो बहुत बड़ा हर्डल्स एवं ना आम करूँ. किंतु गोटे जिनस जो जिनस कहले लिवर डिजीज बढ़ी बढ़ी चलती, निश्चित भाव में बढ़ी बढ़ी चली. किंतु प्रथम माने प्रश्न मो मन रे आसुची, अरे लिवर डिजीज को मुझे बढ़ेबी कहीं, मो पाखे जब समाधान रास्ता अच्छी मुझे प्रिवेंट कहीं करी. आउ सेकेंड जिनस जो हर्डल्स अच्छी, से हर्डल्स बहुत बड़ा नुह. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत बेसी है. आम एक्सपर्टाइज को टिके एक्वायर करूँ, टेक्नोलॉजी को लेकिन आसबू, ब्यूटीफुली करी हबो. जदि भारत में एवं देखु 1800 रु बेसी लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्रति वर्ष होची. डाएट एवं लाइफस्टाइल उपर जब टिके ध्यान देबू आज्ञा बहुत रोग आमको हम ना. जो मेंटल वेलबिंग कहते ब्यूटीफुली आम रही पारू. डाएट जब लिवर रिलेटेड मु कहबी, आवर डाएट शुड बी हेल्दी, शुड बी बैलेंस. संतुलित खाद्य हवा दरकार. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उपयुक्त मात्रा सांगे विटामिन्स मिनरल्स रहा दरकार. ए गोटे नुआ जिनस कहूँ आपण डाएट रे फाइबर बा तंतु जातीय जिनस बहुत रहा दरकार. एवं तो कहुच्छी 400 ग्राम वेजिटेबल फ्रुट्स प्रत्येक दिन खाइबे. कारण जदि वेजिटेबल फ्रुट्स बा फाइबर रहिबो आपनका डाएट रे, आपनका देह सुस्थ रहिबो, मन सुस्थ रहिबो, इम्यूनिटी भल रहिबो. 1/3 कैंसर आपनका बॉडी रे हबनी. आपनका ब्यूटीफुली आपन रही पारिबे. थैंक यू सो मच सर. नाउ विल रिक्वेस्ट स्वामी नरसिम्हानंद टू प्रेजेंट द मेमेंटो.
OTV Health and Wellness Conclave 2023, presenting sponsor Kasturi Chatua, co-supported by Kuchina the Kitchen Experts, associate sponsors Kalinga Hospital Limited and Health Ville Naturopathy and Ayurveda Center. Now let's have an AV related to Kasturi. Can we have the AV please? कस्तूरी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा रे स्वदेशी छतुआ ब्रांड रे को परिचित ना कस्तूरी 1993 मात्र 6000 टंका व्यय भुवनेश्वर सिरीपुर रे आरंभ होइतिला एही संस्था एबे भुवनेश्वर भगवानपुर अंचल रे एहार दुईटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रही। एहार प्रतिष्ठाता हेउछंती ए सुरेश चंद्र पात्र। 2023-24 आर्थिक वर्ष रे एहार टर्नओवर 30 कोटी टंका रे पहुंची। मोट 50 जन कर्मचारी एही संस्था रे कार्यरत। एथि मध्यरु 40 जन हेउछंती महिला। कंपनीर विशेषत्व हेउछि एहा ओडिशा रे स्थानीय उत्पादन को निजर कंचामाल भावरे व्यवहार करिथाय। संपूर्ण मेसिन द्वारा उत्पादित होइथाय एहार समस्त प्रोडक्ट। छतुआ सह अटा उत्पादन रे पाद थापी आगो को बढ़ुछि कस्तूरी उद्योग। निज प्रोडक्ट रो गुणवत्ता को बेस गुरुत्व देइथाय एही संस्था। उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रे कंपनी निजर मार्केटिंग करि आसुछि। एबे राज्य व्यतीत समग्र देश रे मध्य एहार व्यवसाय को प्रसारित करिछि कस्तूरी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड। अभी क्या पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्रमोशन तो मेरा होना था ना, लेकिन वो तो 3 साल जूनियर है मुझसे। और ये प्रमोशन के चक्कर में मैंने तो फ्लैट भी बुक कर लिया। मतलब बात करके भी कोई फायदा नहीं ना। मतलब आज से वो हमारा बॉस होगा। ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है यार? मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा क्या? कस्तूरी, देश का समझदार आटा। कस्तूरी के घर में आने से मैं अपने परिवार का और बेहतर ख्याल रख पा रही हूँ और हर रोज मेरे परिवार को मिल रहा कस्तूरी का भरोसा, जिससे वो रहते हैं हमेशा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। इसीलिए मैं अपने परिवार के दिन की शुरुआत करती हूँ कस्तूरी छतुआ से, जो रखता है इन्हें तेज और तरोताजा। कस्तूरी इस दौड़ती भागती जिंदगी के लिए जरूरी। दौड़ती भागती जिंदगी के लिए जरूरी कस्तूरी। We'd like to call Sunita Sahu, Chief Dietitian, Apollo Hospital, for a one-to-one session with her. Welcome, ma'am. One of the most looked after items to be talked about, that is chatua. And mate kahibe ki यार importance आउ necessity छतुआ रो जनक लाइफस्टाइल रे कोन? छतुआ को मु कहिबी हमर देसी फास्ट फूड जोटा कि हेल्दी डेफिनेटली एंड जोटा हमें कहूचे इंस्टेंट सीरियल। हमें याकू सबू ए जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करके जदि छतुआ खाइबा डेफिनेटली हेल्दी रहिबा। लैक्यूना काहे के रोची आजिकल का यंगस्टर्स रे छतुआ काहे कंज्यूम कर पानंती आउ छतुआ एज अ माने इट्स द नीड ऑफ द आवर आपण काहे कहबे? आगुरु जदि हमें कहिबा स्पेशली ओडिसा रे देखिया गले आगुरु हमें चूड़ा गुंड को छतुआ कहूतले किंबा मुढ़ी गुंड को छतुआ कहूतले एवं अन्य राज्य रे जेमती बिहार हला यूपी हला कि झारखंड हला सेठरे से माने जो बुट डाली को गुंड करके जोटा सत्तू कहंती ताकू यूज करथुले, किंतु एबे छतुआर रूप रंग बदली गलानी। छतुआ मल्टीग्रेन हे गलानी। आमे विभिन्न प्रकार जोटा बैलेंस डाइट रो न्यूट्रिएंट्स हमें कहूचे से चूड़ा भी रोची, गहम भी रोची, प्रोटीन हिसाब रे डाली बहुत गुड़ा रोची, देन नट्स भी रोची, ग्राउंड नट्स पकाउचंती, आमंड्स पकाउचंती एंड विभिन्न प्रकार नट्स पकाउचंती। ये सबू मिसिकी छतुआ गोटे होलसम फूड होची एंड जेहेतु छतुआ कौनसी प्रोसेसिंग देकी जाऊनी डायरेक्ट आइटम ताको कुटिकी आमे छतुआ बनाऊचे तो तार फाइबर कंटेंट भी अधिका एंड आमे जानिचे जे जो जिनसर फाइबर अधिका तार सैटिस्फैक्टरी वैल्यू अधिका एंड ताको खाइले हमको बहुत समय पर्यंत भोक लागबनी। तो छतुआ गोटे कंप्लीट फूड
एंड जो आमे पूर्वरु जेते सबु लाइफस्टाइल डिजीज विषय डिस्कशन कले ताकू मध्य प्रिवेंट करि परिबा। एबे जो मिलेट मिशन चली थिला आई थिंक बहुत जन ताकू फॉलो भी करूथला आपन को से विषय कोन कहबार अछि जदि मिलेट को आमे कोनोसी उपाय रे छतुआ रे रखी पारिबा एंड मिलेट रो गोटे निहाती सेटा गोटे सेपरेट टॉपिक किंतु मिलेट को आमे जेमती चूड़ा को गुंड करके खाई दउचे कि डाली को गुंड करके खाई दउचे मिलेट को सेमती गुंड करके खिया जीवनी मिलेट खाइबार गोटे अलगा उपाय अच्छी ताकू टिके कुक्ड करबा दरकार जो द्वारा कि सेटा बॉडी रे अब्जॉर्ब हेई पारिबो जदि जो माने छतुआ बनाउचंती से माने जदि कि मिलेट को कोनोसी उपाय रे छतुआ रे नहीं पारिबे ताहले निहाती भाबरे सेटा गोटे माने बहुत हेल्थ बेनिफिट दबो एंड आमे जानी जे मिलेट रो बहुत हेल्थ बेनिफिट अछि एंड निहाती छतुआ रे सेटा रहिबा दरकार। Thank you so much, ma'am. Now we'll request Swami Narasimhananda to present a memento to Sunita Sahu. I would like to invite Mr. A. Suresh Chandra Patra, Founder Director, Kasturi Flour Millet Private Limited. And I would like to invite any member from the Cucina Kitchen Experts Group to collect the memento. On behalf of Health Pillay Naturopathy and Ayurveda Center, I would like to invite Mr. Subodh Das, Senior Manager of Sales Department, Odisha Television Network. I'd like to invite CEO of Kalinga Hospital on the stage to collect the memento. आगामी वर्ष पुणी एक नुआ ढंगरे किछि नुआ अतिथिंक सहित ओटीवी आयोजन करिबो हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव रे भाग नेइथिबा समस्त पैनलिस्ट उपस्थित अतिथि गणमाध्यम रे बंधु ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क समस्त कर्मकर्ता समस्त को हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन सह रहुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।